ऑल राइट गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन, राइट। तो हम लोग अभी तक पढ़े थे किस चीज को? आर्टेरियल सिस्टम को। आर्टरीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन्स विच वी नीड टू स्टडी इन द एफएमजी पॉइंट ऑफ व्यू इज वेन्स ऑफ द लेग्स, वेनस सिस्टम ऑफ द लेग्स, venous system of the leg. When I'm talking about venous system of the leg, venous system of the leg is easy to understand as long as we know the basics, right? तो venous system of the leg के बारे में समझने के लिए आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा? Now listen to me. All the complete venous system of the leg is divided into two types. एक होता है superficial vein, एक होता है superficial venous system, ठीक है। अनदर वन इज कॉल्ड एज डीप वेनस सिस्टम, डीप वेनस सिस्टम, ठीक है। तो डीप वेनस सिस्टम एक है और एक है सुपरफिशियल वेनस सिस्टम, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, जो भी आर्टेरियल ब्लड लेग के अंदर जाता है वो वापस आएगा थ्रू द ईदर थ्रू द सुपरफिशियल वेन्स और थ्रू द डीप वेन्स। ओनली 10% ऑफ द ब्लड, 10 to 15% approximately will come back from the superficial vein, and rest of it, about 90% of the blood is coming back by the deep venous system. And I want you to understand, from the superficial veins to the deep veins, from the superficial veins of the deep veins of the leg to the deep veins of the leg, we have some special connection. They're called as परफोरेटर वेन्स। कौन सी वेन्स होते हैं? परफोरेटर वेन्स। तो अब अपने पास कौन सी वेन्स हो गया हमारे पास? वी हैव सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द लेग, डीप वेन्स ऑफ द लेग, बिटवीन देम कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज परफोरेटर वेन्स, राइट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली हियर। यहाँ पे आई वांट यू टू अंडरस्टैंड the vein which is here, it is the deep vein, it is the deep vein, it is the deep vein. The name of the vein is called as femoral vein. Now when you're looking at a femoral vein, ये वाली part जो है इसको ही बोलते हो lateral malleolus of the leg. What is this? Lateral malleolus of the leg. So from the lateral malleolus of the leg, there is a vein which will start and it will go all the way and end up into the popliteal vein. कौन सी vein के अंदर जाता है? Popliteal vein. The name of this vein only called as small saphenous vein. So from the lateral malleolus, which vein started? Small saphenous vein. It went all the way into which vein? Into the popliteal vein, into the popliteal vein, ठीक है। popliteal vein कहाँ पे कंटिन्यू होता है? femoral vein में कंटिन्यू होता है। this is the basic anatomy, right? now when we are talking about this, यहाँ पे देखो medial malleolus of the leg से एक vein शुरू हो रहा है। it is going all the way and directly going into the femoral vein, into the femoral vein. So this vein only, so there is a vein which is starting from the medial malleolus से एक वेन शुरू हुआ, medial malleolus से वेन शुरू होके it went all the way into the femoral vein, into the femoral vein. Now I want you to understand, femoral vein के अंदर जा रहा है तो आप लोगों को इस vein का नाम क्या होता है? The name of the vein is only called as a great saphenous vein, ठीक है। So great saphenous vein will go into the femoral vein at a junction. great saphenous vein femoral vein के अंदर जहाँ पे जाता है इसी को बोलते हो सेफेनोफेमोरल जंक्शन। क्या बोलते हो? सेफेनोफेमोरल जंक्शन, जहां पे ग्रेट सेफेनस वेन फेमरल वेन के अंदर कंबाइन हो रहा है। दिस इज ओनली कॉल्ड एज सेफेनोफेमोरल जंक्शन, राइट। नाउ व्हेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, परफोरेटर वेन्स। परफोरेटर वेन्स का क्या कहानी है? परफोरेटर्स आर वन वे, दे आर द one way directions, they are the one way ones. one way मतलब कहाँ से कहाँ तक जाने देगा? one way from the superficial to the deep, from the superficial to the deep. only possibility of the veins which can go is superficial to deep. superficial to deep is only by perforator. So perforator veins will allow only one directional movement of the blood because they have valves. उनके अंदर क्या होते हैं? valves होते हैं। ये valves क्या करता है? one directional unidirectional movement of the blood को allow करते हैं। that is the story of your which veins? perforator veins. that is the story of your which veins? perforator veins. all right, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? वेनुस का anatomy पढ़ ली है। तो let's study about a most important and 100% MCQ question that is only called as DVT, my dear students. what is that? DVT. so what exactly is DVT? DVT is nothing but डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में जब पढ़ रहे हो सो ऑटोमेटिकली डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ द लेग, डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ द लेग के बारे में पढ़ रहे हो। नाउ लिसन टू मी,
थ्रोम्बोसिस इज नथिंग बट व्हाट इज दैट, क्लॉट बन गया, क्या बन गया, क्लॉट बन गया, कहां पे, इन द डीप वेन्स ऑफ द लेग, इन द डीप वेन्स ऑफ द लेग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, राइट। तो इसके लिए व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, इट इज ऑलवेज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द रिस्क फैक्टर, और द रिस्क फैक्टर इज associated with what is that deep vein thrombosis is because of something called as Virchow triad, because of something called as Virchow triad, ठीक है। now when you're talking about Virchow triad, now listen to me very carefully, Virchow triad includes the following, Virchow triad के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट नंबर 1 दैट इज हाइपर कोगुलेबल स्टेट, कौन से होता है, हाइपर कोगुलेबल स्टेट। तो जिसके अंदर कोगुलेबल स्टेट, हाइपर कोगुलेबल स्टेट इज नथिंग बट क्या हो गया, जिसके अंदर क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गया, द क्लॉटिंग टेंडेंसी इज वेरी हाई इन फैक्टर 5, व्हाट इज दैट, फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन, फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन। फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन के अलावा we have one more condition, that is for example that is your physiological condition only but it is pregnancy, pregnancy में भी क्या होता है, hypercoagulable state आ जाता है। so this is a cause for hypercoagulability, hypercoagulability के अलावा we have one more condition that is only called as stasis, my dear students। stasis is nothing but क्या होता है, जहाँ पे blood flow, blood का movement नहीं होता है, blood का movement नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हो आप लोग, स्टैसिस बोलते हो, क्या कहते हो, स्टैसिस बोलते हो। तो स्टैसिस के लिए, तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैसिस इज कॉज्ड बाय इमोबिलाइजेशन, क्या है, इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन। so immobilization कब होता है, basically whenever patient is not moving the legs, patient is not moving the legs, there is a high tendency that there is a clot formation। तो I want you to understand immobilization के लिए the causes includes orthopedic surgery, orthopedic surgery, orthopedic surgery such as, orthopedic surgery such as for example किसी को hip replacement, knee replacement या external fixation, internal fixation कुछ भी कर दिया लोअर लिंग के अंदर, वहां पे लेग्स मूव नहीं करेगा तो ब्लड एक ही जगह इकट्ठा होके that might lead to blood pooling up and the clot formation। and the last part of the Virchow triad is called as endothelial injury, endothelial injury, what is that, endothelial injury। तो endothelial injury is again injury to the endothelium of the blood vessel, blood vessel का endothelium कभी भी injury होता है that will trigger the clotting cascade leading to the formation of the thrombus, leading to the formation of the thrombus। now I want you people to understand the pathology behind this। so Virchow triad था, Virchow triad risk factor, Virchow triad के वजह से, Virchow triad के वजह से बना क्या, बना थ्रोम्बस, बना क्या, बना थ्रोम्बस बन गया, ठीक है। whenever thrombus बन गया, now I want you people to understand thrombus क्या करेगा, now listen to me very carefully, thrombus will close the vein, thrombus will close the vein। तो vein को क्या कर देगा, बंद करेगा, vein को बंद करेगा तो ऑटोमेटिकली it will lead to decrease of the venous return, ठीक है। venous return कम हो गया, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, the next important factor is that वहां पे there is a increase of hydrostatic pressure, क्या होता है, hydrostatic pressure बढ़ जाता है, and along with that there will be congestion, there will be congestion। तो एक टाइम पे एक बात याद रखो, कहीं पे भी vein हो, artery हो, जिसके अंदर एक ही जगह ब्लड पुल अप हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, पुल अप हो जाता है, पुल अप होने के बाद इमीडिएटली एट एक्यूट कंडीशन इट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फॉर अ लॉन्ग टर्म इट विल लीड टू कंजेशन, फॉर अ लॉन्ग टर्म इट विल लीड टू कंजेशन, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड कंजेशन हो जाता है, जिसके वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइट लीड टू एडेमा। तो ऑटोमेटिकली ए पेशेंट विद ए डीप वेन थ्रोम्बोसिस विल हैव ए क्लिनिकल फीचर लोअर लिम्ब एडेमा, यूजुअली इट इज यूनिलेटरल, बट अगर दोनों लेग में डीवीडी है तो बायलेटरल लोअर लिम्ब एडेमा भी हो सकता है, ठीक है। अब बॉडी क्या करेगा, तुम्हारा बॉडी चुप रहेगा क्या, नहीं, बॉडी थ्रोम्बस को, बॉडी विल ट्राई to break the thrombus, body will try to break the clot, break the clot, clot को break करने के लिए कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली फाइब्रिन के वजह से बना होता है क्लॉट, तो फाइब्रिन का डिग्रेडेशन किया हुआ प्रोडक्ट्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द क्लॉट दैट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ द डी डाइमर इन ए पेशेंट, डी डाइमर बढ़ जाता है। डी डाइमर क्या होता है, आर्टेरियल डिसीज में मैं पढ़ाया हूँ, डी डाइमर इज बेसिकली it is a fibrin degradation product, it is a fibrin degradation product, right। now whenever there is this particular thing, the patient will have clinical features of any deep vein thrombosis, patient will have pain,
पेन के अलावा एडेमा, पेन के अलावा what will be there, edema will be there in the lower limb. Okay, it might be unilateral, might be bilateral, but usually DVT is a unilateral condition, but there are cases जहाँ पे bilateral DVT भी हो सकता है. ठीक है, पेन होगा. ठीक है, लोअर लिम्ब एडेमा होगा. लोअर लिम्ब एडेमा के अलावा some people will have fever, some people will have fever which is a non-significant symptom. Pain fever के अलावा, pain fever edema के अलावा, I want you to understand these people who is having DVT, these people will have any of the risk factor always associated with the risk factor, maybe hypercoagulability हो etc के साथ risk factor भी हो सकता है. These are the possibilities. Apart from that, this pain के साथ में there can be two types. There can be pain with discoloration. Pain with discoloration. Pain with what? Discoloration. So pain with discoloration की जब बात कर रहे हो, that becomes an interesting concept for you people. Pain with discoloration will have multiple types you need to understand. Pain with discoloration, though, that is only called as alba dolens. What is that? Alba dolens. So alba dolens के अंदर there will be painful white color limb. What is that? White color limb. अगर वही चीज, अगर if you are talking about pain with discoloration, this is something called as a cerulodolens. क्या होता है? Cerulodolens is nothing but it is a painful blue color limb. Painful which color limb? Blue color limb. That is only called as your, what is that? That is a cerulodolens. So phlegmasia is nothing but painful limb, cerulodolens and alba dolens. So pain के साथ discoloration होता है. There can be white color limb, there can be blue color limb, right? Now when we have a patient with DVT, the first and most important, the investigation of choice for the DVT investigation of choice, you are going to use, my dear students, that is only Doppler. That is only your Doppler. Doppler will be easiest method to, what is that? That is easiest method to diagnose. जिसके अंदर आपको मिलेगा, there will be something called as filling defect. क्या मिलेगा? Filling defect मिलेगा. Filling defect मिलते ही आपको सोचना पड़ेगा, there is a clot formation. ठीक है, अगर Doppler के अंदर कहीं पे filling defect मिलेगा तो you need to think of, what is that? You need to think of Doppler के अंदर think of clot. इसके अलावा we can also use venography. But most widely and commonly used one which I would suggest is a Doppler. ठीक है, तो डॉपलर करके आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट, आई वुड रादर कॉल इट एज ए मैनेजमेंट. of the DVT. Q management of the DVT, because management includes, there are multiple aspects. Management के अंदर there is one particular aspect that is only called as prevention. अगर किसी को रिस्क फैक्टर है तो पहले से ही क्या करो? प्रिवेंशन करो. प्रिवेंशन का फैक्टर्स इंक्लूड्स अर्ली मोबिलाइजेशन. ठीक है, अर्ली मोबिलाइजेशन करके मतलब क्या करोगे? अगर कोई आर्थोपेडिक सर्जरी है, डीवीटी का रिस्क है, तो अर्ली मोबिलाइजेशन करो, लिम्ब का मोबिलिटी बढ़ाओ, तो जिसके वजह से क्या हो सकता है? रिस्क कम हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो यूज व्हाट इज दैट कॉल्ड एज न्यूमैटिक स्टॉकिंग्स. न्यूमैटिक स्टॉकिंग्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टॉकिंग्स जिसके अंदर एयर कंप्रेशन स्पेसिफिकली इंटरमिटेंट कंप्रेशन ऑफ द लोअर लिम्ब हो जाता है. इसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज प्रेशर स्टॉकिंग्स. व्हाट इज दैट? प्रेशर स्टॉकिंग्स. ठीक है, प्रेशर स्टॉकिंग्स. इसके अलावा व्हाट एल्स वी कैन यूज? तो प्रिवेंशन के अलावा वी कैन ऑल्सो यूज व्हाट इज दैट? एंटीकोगुलेंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? एंटीकोगुलेंट्स. तो एंटीकोगुलेंट्स के अंदर कैसे यूज करोगे? क्या एंटीकोगुलेंट्स यूज करोगे? सो सुन लीजिए, एंटीकोगुलेंट्स फॉर द फर्स्ट 5 डेज, फर्स्ट 5 डेज के अंदर क्या करोगे? 5 डेज के बाद, आफ्टर 5 डेज क्या करोगे? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. फर्स्ट 5 डेज के अंदर यू आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन.
with something called as warfarin. Something called as warfarin. What is warfarin? Warfarin is the anticoagulant drug which inhibits vitamin K epoxidase, which is a drug which inhibits gamma carboxylation of the factor number 2, 7, 9, 10. ठीक है. नाउ लिसन टू मी, ये वारफेरिन को काम करने के लिए इट विल टेक एटलीस्ट 3 days टू शो द एक्शन. तो बिकॉज ऑफ विच उसको कवर अप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन को यूज करेंगे. आफ्टर 5 days वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन ओनली विथ ओनली ड्रग दैट इज योर वारफेरिन. ओनली ड्रग दैट इज योर वारफेरिन. ठीक है, ये दोनों तो आपने समझ गए. दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वारफेरिन एंड हेपेरिन टुगेदर वी कैन कॉल दिस ओनली कॉल्ड एज warfarin and heparin bridging. What is that? Warfarin and heparin bridging. ठीक है, warfarin and heparin bridging. So this is your story of your anticoagulant drugs. ठीक है. Now listen to me very carefully. Now we need to understand some important aspect. If the patient has a history of hemorrhagic stroke. अगर पेशेंट को कहीं पे भी लाइफ टाइम में कभी भी हेमोरेजिक स्ट्रोक का हिस्ट्री है, हेमोरेजिक स्ट्रोक का व्हाट इज दैट हिस्ट्री है, तो देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू. इफ ए पेशेंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक दैट इज absolutely contraindication. It is absolutely contraindication for something called as anticoagulants. तो anticoagulants के लिए क्या हो गया, contraindication हो जाएगा. तो उस टाइम में क्या करोगे, दैट इज द टाइम. तो उस टाइम पे यू कैन नॉट यूज एनी एंटीकोगुलेंट. तो दैट टाइम वी कैन कंसिडर यूजिंग व्हाट इज दैट, समथिंग कॉल्ड एज आईवीसी फिल्टर. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट, आईवीसी फिल्टर. तो आईवीसी फिल्टर के बारे में मैं समझाऊंगा व्हेन आई एम टीचिंग यू पीपल अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डीवीटी. ठीक है. Now listen to me very carefully. What happens is that for example I want you to understand some clinical signs. देखो साइंस, क्लिनिकल साइंस के बारे में जब पढ़ रहे हो, they are not done in practice. नॉर्मली नॉट डन इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के अंदर नहीं करना चाहिए. प्रैक्टिस के अंदर करोगे तो रिस्क बढ़ेगा. ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द नेम्स एंड द थियरी बिहाइंड द साइंस. वी हैव 2 साइंस दैट इज ओनली कॉल्ड एज होमन्स साइन. What is that? Homan's sign. एक होता है Homan's sign and another one is called as Moses sign. तो 2 साइंस होते हैं क्लिनिकल साइंस. दोनों क्लिनिकल साइंस को प्रैक्टिस में नहीं करना चाहिए बिकॉज जिसके वजह से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन. तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए होमन साइन एंड मोसेस साइन को आप प्रैक्टिस में नहीं करोगे. ये होमन साइन होता क्या है, होमन साइन के अंदर आप लोग लेग को क्या करोगे, डार्सिफ्लेक्शन करोगे. मान के चलो दिस इज द फुट ऑफ ए पर्सन. सो फुट को क्या करोगे, डार्सिफ्लेक्शन करोगे. इमीडिएटली काफ रीजन में पेन आएगा. दैट इज होमन्स साइन. मोसेस साइन, मान के चलो दिस इज द काफ रीजन एंड दिस इज द फुट. काफ रीजन में प्रेशर करोगे तो ऑटोमेटिकली पेन आएगा. दैट इज ओनली कॉल्ड एज योर मोसेस साइन. दीस आर द 2 clinical signs which are not done in clinical practice. ठीक है. Now at the same time, if the patient has what is that, that is only called as varicose veins. To differentiate varicose vein if DVT is there or not there. If DVT present or absent को देखने के लिए we are going to use a test called as modified Perthes test. I want you to remember the name. The name of the test is called as modified Perthes test. Modified Perthes test काम पे यूज होता है बेसिकली इन पेशेंट विद वेरिकोस वेन. उसके अंदर DVT है या नहीं है उसको देखने के लिए you are going to use modified Perthes test. Agar once you understood about modified Perthes test, now let's understand if the patient is not treated. If patient is not treated, होगा क्या? If not treated, it will lead to one of the major problem. If not treated, it will lead to complication that is only called as a pulmonary embolism. क्या होता है? Pulmonary embolism. Pulmonary embolism के अंदर होगा क्या? Basically clot था ना, clot vein के अंदर था, vein से dislodge होके वो कहाँ पे जाएगा? Pulmonary embolism के अंदर. So deep veins of the leg
deep veins of the leg say it will go into femoral vein. Femoral vein say it will go into iliac vein. Iliac vein say into inferior vena cava. Inferior vena cava say it will go into right atria followed by the right ventricle. Right ventricle से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग. लंग के अंदर जाके ये स्ट्रक हो जाएगा लीडिंग टू pulmonary embolism. Leading to pulmonary embolism. So any patient with pulmonary embolism will have a clinical feature such as a severe chest pain. Patient might have chest pain. Patient might develop chest pain. Chest pain के अलावा patient will also develop hemoptysis. What is that? Hemoptysis. Hemoptysis. Hemoptysis is nothing but sputum के अंदर blood stains मिलेगा. Apart from the hemoptysis, patient will also develop a fresh, what is that? Fresh right bundle branch block. Fresh right bundle branch block. These are indicators of what is that? Of a pulmonary embolism, right? Now pulmonary embolism again क्या हुआ था? एक clot था, clot dislodge जो क्या आ गया chest के अंदर. तो I want you to understand if at all patient comes to you with this condition, now I want you to understand the first important aspect. What is that? If the patient is normal patient, you are going to do CT angiogram. CT angiogram in normal patient. अगर वही चीज pregnant female आएगी तो what you are going to do is a ventilation perfusion scan. What you are going to do? VQ scan, ventilation perfusion scan. This will be the investigation of choice for a pulmonary embolism. Pulmonary embolism. So as CT angio will be for, very good, for what is that? What is that? You are doing for the normal patient. अगर pregnant female है तो VQ scan. ठीक है. अगर CT angio कर भी दिए तो usually what type of infarct मिलेगा आप लोगों को, ये भी important है. wedge shaped, usually wedge shaped infarct मिलता है आप लोगों को CTO angiogram. एंड आप लोगों को क्लियरली एक ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट जिसके अंदर फिलिंग डिफेक्ट भी दिख जाएगा. यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द पेशेंट इज हैविंग व्हाट इज दैट? pulmonary embolism. Now whenever we have a pulmonary embolism, first 6 hours के अंदर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं. तो first 6 hours के अंदर आया or if it is a small embolus, then you are going to use that is thrombolysis. And अगर massive हो गया, अगर massive thromboembolus है or more than 6 hours है, then you are going to go for a surgical treatment that is only called as thrombolectomy. What do we call it as? Thrombolectomy. ठीक है ना. अगर पूछा गया इनिशियली एनी पेशेंट, अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो गई, इमीडिएटली फर्स्ट ड्रग आप लोगों को देना है इनिशियली हमेशा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन. अगर पूछा सिंगल ड्रग फॉर ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इमीडिएटली विदाउट गिविंग एनी टाइम फ्रेम नथिंग, सीधा मार्क करो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन. फर्स्ट 6 आवर्स पूरा हिस्ट्री मेंशन करके दिया. गो फॉर थ्रोम्बोलाइसिस करने के लिए ड्रग्स ऑलरेडी पता है आप लोगों को, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एंड मैसिव थ्रोम्बोएम्बोलिस है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? थ्रोम्बोलेक्टमी करना पड़ेगा. ठीक है ना. यहां तक तो मैं पढ़ा दिया आप लोगों को. नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड यहां पे जो मैं डीवीटी पढ़ा रहा था, डीवीटी के अंदर आई टोल्ड यू पीपल वारफेरिन इज यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. इन द प्रेग्नेंट फीमेल आएगी तो उनको क्या करोगे? प्रेगनेंसी के अंदर है तो आप लोगों ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूजुअली यू आर गोइंग टू यूज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आर्गन डेवलपमेंट होता है तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन और हेपारिन यूज करो, जिसके वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है. ओनली साइड इफेक्ट इज टू द मदर, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस. फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में तब शिफ्ट करो वारफेरिन के अंदर. तब तक ऑल द आर्गन डेवलपमेंट वुड हैव बीन कंप्लीट. तो आप लोग रिस्क को कम करोगे. किस चीज का? आर्गन डैमेज ऑफ द बेबी को रिस्क को कम करोगे. एंड एट द सेम टाइम थर्ड ट्राइमेस्टर में कई दिन के लिए शिफ्टर टू हेपारिन
and a few days before the delivery, then again delivery से कई दिन पहले again shifter to what is that is only your warfarin, क्योंकि heparin को continuously use करोगे osteoporosis हो जाएगा, and that will be a complication or it might lead to easy tendency of fracture during the pregnancy. तो इसलिए उसको avoid करनी चाहिए. उसको avoid करने के लिए आप लोग क्या करोगे, you are going to use this particular technique. This is the story of your complete story of your complete story of your deep vein thrombosis, right? Thank you.